Its turn is on examination. पूर्वर आम पढ़ी माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज ऑल द क्वेश्चन प्रत्येक प्रश्न आम टच करते प्रत्येक एमसीक्यू आम टच करते तो आज ट्राए करी कहीपारूनी कंप्लीट करें ना नहीं बहुत बड़ चैप्टर ऑन एग्जामिनेशन 4टा यूनिट तथापि ट्राए करी कंप्लीट करने गोटे क्लास रे कारण आम पाखे समय नहीं तुम पाखे तो तुम तो परीक्षा दब तुम पाखे समय ना मो पिला पढ़े पढ़े मो पाखे समय ना पिले सो फिर भी ट्राए करवा सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर समय नष्ट करवा नहीं पिले चैप्टरटा हूँ ऑन एग्जामिनेशन परीक्षा उपरे ऑन एग्जामिनेशन कहले समस्त जानी परीक्षा उपरे नहीं तो परीक्षा उपरे व्हाट इज द व्यू ऑफ you can say the author on examination. So Sir Winston Leonard Spencer Churchill, the name of the author was what? Sir Winston Leonardo Spencer Churchill is the full name of Winston Churchill. The full name of Winston Churchill is Sir Winston Leonardo Spencer Churchill. Was born in the year 1874 1874 मसीह तांकर जन्म हुए and died in the year 1965 1965 मसीह से मृत्युवरण करते दुईटा जिनस दुईटा एमसीक्यू कहले चलो कौ मसीह से जन्मग्रहण करते 1874 आ मरते 1965 मसीह पिले मुझे टी स्पीड अप करी प्रोसेसटा को स्पीड अप करी ठीक अच्छे एंड वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ट्वाइस मन रखा दुई थर से प्रधानमंत्री होते was the prime minister ex prime minister of England for twice दुई थर के थर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड लिखा कीवर्ड सब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एंड एटा ट्वाइस दी थर okay how often did Winston Churchill become the prime minister of England the question will be twice दुई थर when was Winston Churchill born 1965 when was he 1874 when was he died 1965 this is how we can get the MCQ ठीक है बिले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ट्वाइस 1940 to 45 and 1951 to 55 1940 to 45 and 1951 to 55 1951 to 55 এই দুইটা टर्म से अच्छा ये गोटे प्रश्न आसीपे द फर्स्ट टर्म ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर और फ्रॉम द ईयर डैश टू डैश सो इट वुड बी 1940 to 45 एंड द सेकेंड टर्म वाज 1951 to 1955 ओके दुईटा प्रश्न आसीपे जीवा आगु ए नोटेड स्टेट्समैन एंड ओरेटर बिसाइड्स अ पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ हेबा सत्वे बिसाइड बीइंग ए पॉलिटिशियन ही वाज आल्सो एन ओरेटर एंड स्टेट्समैन orator and statesman. Churchill was also an officer in the British Army. So he was an orator, a statesman, and he was an officer in the British Army. British Army ro jona officer madhya thile. A historian, a writer, and an artist. Also, he was a historian, he was a writer, he was an artist. Sabbu. These are the definition of Winston Churchill. And one important thing is there, he was awarded Nobel Prize for literature. In literature he was awarded Nobel Prize. कौन पाइथिले पिले Nobel Prize कौन पाइथिले लिटरेचर पाइथिले लिटरेचर साहित्य पाइथिले सो Nobel Prize in literature को ईयर रे पाइथिले इन द ईयर 1953 1953 मसीह रे केबे 1953 मसीह रे in which year Winston Churchill was awarded Nobel Prize. So it was 1953. In which subject Winston Churchill was awarded Nobel Prize? For literature. Or which was the most acclaimed award being given to Winston Churchill? That was Nobel Prize. So 3 questions are there. Mon rakhiba 3 questions are there. And literature in 1953. Okay. Let's go. आगु को जीवा एट हारो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम चैप्टर एट हारो एंड दिस व्हाट दिस प्रोज ऑन एग्जामिनेशन इज एन एक्सर्प्ट कहले उद्धृतांश एट हारो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द चैप्टर 2 ऑफ हारो चैप्टर 2
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା, ବହି ନାଁ ହେଉଛି ଏ ରୋବିଂ କମିଶନ ମାଇ ଆର୍ଲି ଲାଇଫ୍। କ'ଣ ବହିର ନାଁ ଥିଲା? ଏ ରୋବିଂ କମିଶନ ମାଇ ଆର୍ଲି ଲାଇଫ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚିଲ୍। ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚିଲ୍ଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିର ନାଁ ଥିଲା ପିଲେ ଏ ରୋବିଂ କମିଶନ ମାଇ ଆର୍ଲି ଲାଇଫ୍। ୟେସ୍, a robbing commission my early life was the autobiography of Winston Churchill. So what is the name of Winston Churchill's autobiography? A robbing commission my early life, and it was published in the year 1930. 1930 ମସିହାରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। କୋଉଟା? A robbing commission my early life was published in the year 1930. So if there will be a question, what was a robbing commission my early life? It was the autobiography of Winston Churchill. When was a robbing commission my early life was published? 1930. तो ये भाया प्रश्न बुले बंके प्रश्न आसो पिले सीधा सीधा प्रश्न आसो किसी माने ना। तो इच एंड एवरी सेंटेंस को आमको जानिबार अच्छे। तो यहाँ थिला कौन? दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर। वर्तमान पिला जीवे आगु को फर्स्ट यूनिट को जीवा सीधा सीधा, कारण समय बहुत कम भितर ट्राए कर 1 आवर भितर सारिबा पे क्लास टाको। So I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable regions of examination. First sentence कौन ची? I had scarcely passed माने कष्टे मस्ते कले बड़े कौशले नहीं कि बिले। So I had scarcely passed my 12th birthday। मते 12 वर्ष जस्ट मु पास करी छी। तो केते वर्ष होउतला? ताहले मते 13 वर्ष होउतला। 12 वर्ष 12तम बर्थडे मु सेलिब्रेशन करी छी, ताहले 13 वर्ष रे मु एंट्री करी छी। I had scarcely my 12th birthday when I entered। enter कहले प्रवेश कली। inhospitable कहले अप्रिय, जहाँ हमको भलो लगे नहीं। inhospitable regions of examination, से अप्रीतिकर परीक्षार अंचल भितर को मु पास कली जते मोर 12तम माने मते 12 वर्ष पूरीला, 13 वर्ष आरंभ होला। That means the age in which he entered the inhospitable regions of examination was just 13. Yes बेटा जोस्ना, he was just 13 years of age। जस्ट तांको 13 वर्ष होउतला से inhospitable regions of examination भितर को एंटर कले। सो व्हाट इज द एज ऑफ विंस्टन चर्चिल व्हेन ही एंटर्ड हैरो? एज केते थिला तांकर? इट वाज 13। वेरी गुड संध्या। यस, सो inhospitable and according to Winston Churchill the regions of examination was inhospitable for him। नहीं अप्रिय, जोटा प्रीतिकर नुह, जोटा हमको भलो लगे नहीं। through which for the next 7 years I was destined to journey। through which for the next 7 years I was destined to journey। ताहले चर्चिल को आउ केते वर्ष सेठी रहिबार थिला? how long did he will he stay there? 7 years। how long Winston Churchill will spend there in the examination? Yes, 7 years। तो तांको 7 वर्ष पुणी रहिबा को थिला तांको। ताहले को बयस पर्यंत तांको रहिबार थिला पिले? केते वर्ष पर्यंत तांको से एग्जाम देवार थिला? व्हाट इज द एक्सट्रीम एज ही हैड टू राइट द एग्जामिनेशन? 20 वर्ष पर्यंत। 13 + 7 कहले 20 पर्यंत। ठीक अछि, मन रखिबा सब जिंस। यस, 20। सो एंड एंटर द inhospitable regions of examination through which for the next 7 years I was destined to journey। these examinations were a great trial for me and these examination एई जो परीक्षा होउतला, जो परीक्षा जो मु दउतली were a great trial मो पाई। it was just like a punishment, it was just like a test for me। चरम परीक्षा मो पाई थिला नहीं, it was a great trial for me। तो एग्जामिनेशन केमिति थिला तांको पाई? it was great trial नहीं, the examination was a great trial for Winston Churchill। so trial to me, the subject which were dearest to the examiners, the subject which were dearest to the examiner, जो सब्जेक्ट गुड़िक, जो विषय गुड़िक परीक्षक मानक भल लगुला, जो 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 सब्जेक्ट गुड़िक परीक्षक माने भल पाउथिले, माने जो माने क्वेश्चन तैयारी करुथिले से मानक जोटा भल लगुला। कौन पिला? दिस एग्जामिनेशन वर ए ग्रेट ट्रायल। दिस सब्जेक्ट व्हिच वर डियरेस्ट टू द एक्जामिनर्स वर ऑलमोस्ट इनवायरेबली दोज आई फैंसीड लीस्ट। इनवायरेबली कहले ऑलवेज पिले, इनवायरेबली कहले ऑलवेज, इनवायरेबली दोज आई फैंसीड, फैंसीड कहले भल पाइबा, फैंसीड लीस्ट, लीस्ट कहले सबटर कम। तो जो सब्जेक्ट गुड़िक से भल लगुला से सब्जेक्ट गुड़िक मत बिल्कुल भल लगु नथिला। आई हेट दो सब्जेक्ट मरला। सो द सब्जेक्ट व्हिच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स आई हेट दो सब्जेक्ट, जोटा परीक्षक मान भल लगुला से सब्जेक्ट गुड़ाक मत जमारू भल लगु नथिला। मन रहा। सो इट वाज द रीजन, that may be a reason, that's why he was telling that it was a great trial for me नहीं, that was the reason।
Fancy, I would have liked to have been examined in history, poetry, and writing essays. So, my favorite subject were history, poetry, and writing essays. Mone rakhiba. So, what are the favorite subject of Winston Churchill? History, poetry, and writing essays. Mone rakhiba. These are the favorite subject of Winston Churchill. Okay, I would have liked to have been examined. So, Churchill would have been liked to be examined in which subject? History, poetry, and writing essays. So poetry and writing essay, the examiners on the other hand, कहले अपरा पक्षे, the examiners, what happens? Were partial to Latin and mathematics. They were partial to Latin and mathematics. So what are the favorite subject or like subject of examiner? Examiner माने को subject को भलो पाउदल बेले Latin and mathematics. Latin and mathematics. मन रहा आउ विंस्टन चर्चिल को सब्जेक्ट भल लगुला हिस्ट्री पोएट्री एंड राइटिंग एसेस ठीक है जी दिस आर द लाइक सब्जेक्ट ऑफ विंस्टन चर्चिल एंड द एग्जामिनेशन लाइक सब्जेक्ट वेयर लैटिन एंड मैथमेटिक्स तो एमाने एथ्रु परीक्षा दउतले ए बाबू एथ्रु चाहुतले परीक्षा होबा पई फल रे कोन होतला कोलिजन होतला कोलेटरल डैमेज हिस्ट्री पोएट्री एंड राइटिंग द एग्जामिनेशन ऑन द अदर हैंड वेयर पार्शियल टू लैटिन एंड पार्शियल कहले पक्षपात पार्शियल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स एंड देयर विल प्रिवेल जदि टीचर भितर और स्टूडेंट भितर झगड़ा हम क्वेश्चन को नहीं किए जीतब ऑब्वियसली द टीचर विल विन द मैच नहीं कि सो देयर विल प्रिवेल से शिक्षक मानकर कथा रहिला आउ सेही सब्जेक्ट रे ही परीक्षा हैला कोथरे लैटिन आउ मैथमेटिक्स रे परीक्षा हैला जो थरे मु चाहू नथिली परीक्षा हो जो लागू नथिला. So moreover, motamoti moreover, the question which they asked on both these subjects were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer. से जहाँ भी हला पिले अरे तुम मोर फेवरेट सब्जेक्ट रू प्रश्न पचार ना ठीक अच्छे टी सहज प्रश्न पचार है ना दादा सहज प्रश्न पचार मुझे दे था उत्तर मुझे कहूँ हिस्ट्री पोएटिक राइटिंग एसेस मत एग्जाम कर तुम तो कल ना लैटिन आउ मैथमेटिक्स एग्जाम कल किंतु जो क्वेश्चन पचार टी सहजिया प्रश्न पचार है ना दादा ना से भाया भी किसी है ना तो कौन है बोले मोर ओवर द क्वेश्चन which they asked on both this subject जो प्रश्न गुड़ाक पढ़ला परीक्षा रे both these subjects were almost प्राय सबू were almost invariably always प्रत्येक परीक्षा रे always invariably those से गुड़िक to which I was unable to suggest a satisfactory answer. जेते भी प्रश्न पचारिले को प्रश्नर उत्तर मु ठीक से दे पारिली नहीं मन रहा कौन सी प्रश्न उत्तर मु ठीक से दे पारिली नहीं. एंड वर्तमान कौन कहते विंस्टन चर्चिल कहते कौ कथा बोले आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू. अरे मु चाहूली मु जो जिनस जानी मत से प्रश्न कर. आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड व्हाट आई न्यू. मु चाहूली मत पचरा जाऊ मु जानी से मत पचरा जाऊ बट दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो. दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो. से माने कौन करथिले दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो. से माने सबले ट्राई करथिले प्रश्न पचारिबा पई जो प्रश्न गुड़िक मु जानी नथिली मु जो प्रश्न जान नथिली से पुरुष माने प्रश्न करुथिले. When तापर आउट से कौन कहउछन when I have willingly displayed my knowledge जेतबेला मु चाहूली मु मो निज इच्छा रे मोर ज्ञान को प्रदर्शन करबा पई चाहूली आई वांट टू शो अप माय नॉलेज विथ माय विश एट दैट टाइम दे साउ टू एक्सपोज माय इग्नोरेंस. they were trying the examiners they were trying to expose my ignorance. मु जानी नथिबा पार्टटा को से माने एक्सपोज करूथिले मु चाहूथिली मो जानिथिबा जिंस प्रदर्शन करिबा पई. एंड एई जगह रे कोन होबो पिले जदि सेपट गोटे ट्रक आउची एपट गोटे कार जाउची दी जनकर साइड रे जाई कि दी जन जदि परस्पर मुहामुही हेबे कोन होबो छोटिया जिनस ही नष्ट होबो नहीं कि कार ही डैमेज होबो ट्रक रो किसी क्षति होबो नहीं. तो एठी विंस्टन चर्चिल कार
एग्जामिनर्स माने हेले ट्रक कहीं उदाहरण देली तुम बुझी पारुथो दे साउट टू एक्सपोज माय इग्नोरेंस they sought to expose my ignorance. This sort of treatment had only one result, and this sort of treatment ये जो अवस्था होता ये जो अवस्था ये जो घटना सब घटुला it has only one result गोटे ही रिजल्ट थिला यार फल कौन गोटे ही जिनस थिला sort of treatment had only one result. I did not do well in examination. मु परीक्षा भल करिली नहीं मु परीक्षा भल करिली नहीं भल करि पारिली नहीं. I did not do well in the examination. मु परीक्षा भल करि पारिली नहीं फल जाहला. सो एठी गोटे प्रश्न होसे why did Winston Churchill did not do well in examination? Why did Winston Churchill didn't do well in examination? Winston Churchill परीक्षा रे भल कले नहीं कहीं के आंसर आई वांट टू सी योर आंसर शेष तो डिस्कस करी भाई प्रश्न गुड़िक ठीक अच्छे पे कहीं से भल कले ना करें नहीं. Next, this was especially true of my entrance examination to Harrow. This was what I was telling. मुझे कहूली टिके आगु. This was especially true of my entrance examination to Harrow. तो हारो रे पढ़ाई जो परीक्षा देवाई गली एंट्रांस जो देवाई गली से एंट्रांस एग्जामिनेशन ये जिनस घटी मो सहित. फर्स्ट ऑफ ऑल सो द थिंग्स द अदर नरेटिंग इज अबाउट what about the entrance examination of Harrow रे जो एंट्रांस एग्जामिनेशन होता तार जो प्रक्रियाटा से प्रक्रिया विषय से कहते. द हेडमास्टर वाज डॉक्टर वेल्डन. सो वाज द हेडमास्टर ऑफ Harrow. What is the name of headmaster of Harrow? Was Dr. Weldon. The question paper set of Latin and mathematics, and the writer had no knowledge them subjects. He did not do well examination. Okay, good. Come like on. So my question is, who was the headmaster of Harrow? Dr. Weldon. Very good. Dr. Weldon was the headmaster of Harrow. The headmaster, Dr. Weldon, however, took a broad-minded view of my Latin prose. However, view took a broad-minded view. Broad-minded view कहले कौन पिले माने छोटिया मोटिया भावना न रखिकी बड़ भावना रखिकी गोटे जिनस को चिंता करवा. ब्रॉड माइंडेड माने पेपर मैनिफेस्टेशन उपरे खाली विश्वास न करी पिलार इनर एबिलिटी उपरे को जज करवा. दैट इज कॉल्ड ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ माय लैटिन प्रोज. ही सो डिसर्नमेंट DISCERNMENT डिसर्नमेंट कहले जजमेंट पिले. डिसर्नमेंट स्टैंड फॉर DISCERNMENT. डिसर्नमेंट स्टैंड फॉर जजमेंट एक्चुअली. Discernment stand for judgment. He showed discernment, judging my general ability कहले साधारण दक्षता. से जो मो पाखे जहाँ ज्ञान थिला मु जहाँ जानी थी से जिनस उपरे से जजमेंट कले इंस्टेड ऑफ जजिंग माय पेपर्स जहाँ लिखी मु ताको से जज कले नहीं. So he showed discernment in judging my general ability. This was the more remarkable, and this is more remarkable. Why it is more remarkable? Because I was found unable to answer a single question in the Latin paper. Reason कौन थिला? Why it is more remarkable? एटा एते भलो काहे के या को एते फोकस काहे के दिया जाउतला? What the reason? Because I was found unable to suggest or unable to answer a single question in the Latin paper. मोर जो एंट्रांस एग्जाम रे जो लैटिन पेपर थिला से लैटिन पेपर रे मु गोटे प्रश्नर भी उत्तर दे पारिली नहीं. I was unable to suggest or write a single answer. गोटे भी प्रश्नर उत्तर मु दे पारिली नहीं. कोथरे? In which paper? Latin paper. In which entrance examination? Harrow. Who was not able to write a single answer? Winston Churchill. What is that paper? Latin. Getting me? So Latin paper. I wrote my name. So what I did? I wrote my name. Only wrote my name. Where at the top of the page? Where at the top of the page? Top of the page. जो मत paper दिया इतला paper ऊपरे मुकांगली I wrote my name. Of the top of the page, I wrote down the number of the question 1. I wrote down the number of the question 1. Kangali. It also suppose this is the A4 size paper. So what I did here, I wrote the name. I wrote my name. Then I wrote the number like this.
Okay, thereafter. So what the more remarkable, because I was found to unable to answer a single question in the Latin paper, I wrote my name at the top of the page. I wrote down the number of the question one after much reflection. Reflection कहले भाबिबा. After much reflection, बहुत भाबिला परे. After much reflection, I put a bracket round it thus. I put a bracket round it thus. कौन कहली? Bracket दे देली. बहुत भाबिला पर ब्रैकेट देइछि मु पिले मन रखिबा. After much reflection, what he did? He put bracket. So what did he write on his foolscape paper? His name and number only. His name and number only. Getting me? These are important questions. So Latin paper, I wrote my name at the top of the page. I wrote down the number of the question one. After much reflection, I put a bracket around it like this. But thereafter, तापरे कौन हला पिले? तापरे I could not think of anything connected with it. I could not think of anything connected with it. कौनसी जिनस भी से प्रश्न संबंधित कौनसी जिनस मो मस्तिष्क को आसिला नहीं. I didn't find anything. कौनसी जिनस मो मस्तिष्क को आसिला नहीं. So after much reflection, yes. So with it, that was either relevant or true. That was either relevant, तार संपर्कित किंबा से संपर्कित किसी सत्य किसी भी मो मस्तिष्क को आसिला नहीं. जे मु कौन लेखिबी कौन नहीं, I was unable to decide. I didn't get anything. किसी तो आसिला नहीं. आउ कौन करिबी माने मु ढाबा मारिबा पे चाहिले भी ढाबा मारि पारलिनी. कि तो पाइलट तो ढाबा मारिबी. माछ जागा तो बाघ लेखि पारिबिनी ना. माछ जगह मु ठीक अच्छी रोही माछ जगह भाकुर माछ लिखिपारि. माछ जगह बाघ तो लिखिपारे बिल्ली तो लिखिपारे ना. तो यही भाया किसी कनेक्टेड जिनस ही मत मिलला नहीं. सो थिंक ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड. सो इट वाज इधर रेलेवेंट टू एक्सीडेंटली घटनाक्रमे दुर्घटनाक्रमे यू कैन से इंसिडेंटली घटनाक्रमे इंसिडेंटली. So they arrived from nowhere, in particular brought in several smudges. They are arrived from nowhere. Go to asila mu janini. There are particular brought in several smudges. More paper upere kola kola dago. Pani podile jemti dago hui. Several dago susti hegala. Several blot in smudges. I don't know from where it arrived. They arrived from nowhere. It means, getting me? So what happens? There are several blots in smudges. मो आखिरु लुह झरिबा स्टार्ट हला. मु कांदिबा आरंभ कली कारण मते किसी आसु नथिला. मु फेल हे जिबी. मु कांदी पकेली. मो आखिरु लुह पड़ी कि पेपर उपरे जो तुम देखि दिबो ट्रांसपेरेंट गोटे कला भलिया दाग हुए जते बेले पेपर उपरे पानी पड़े. लुह जते बेले पड़े तो आउरी. So smudges, I gazed for 2 whole hours. How long did he gaze? केते समय देखिले? How long did he gaze? He gazed for 2 whole hours. Getting me? So what are the mark that was created on the paper? The tear mark. So what do we call the blot and several smudges? That is called the tear mark. Look at the question. This is a question. 2 hours, yes. 2 whole hours at this sad spectacle. What is the sad spectacle being called by Winston Churchill? What is the sad spectacle? The tear mark on the paper is called the sad spectacle. Sad spectacle. And then merciful users. Merciful user कहले attendant by invigilator आम भाषा रे. Merciful कहले एठी तांको दयालु बोली कुहाई. कागु दयालु बोली कुहाई. इनविजिलेटर मान को जो माने कॉपी करेक्शन कलेक्शन करुतले से मान को दयालु बोली कुहाई बिले. So I guess for 2 whole hours at this said spectacle, and then merciful users collected my fullscape with all the others and carried it up to the headmaster's table. More copy. कोठी की गला हेडमास्टर को टेबल को गला कहीं की. Why the copy of Winston Churchill was carried up to the headmaster's table? What is the reason? The reason was that he had not written anything in the Latin paper. That's why it was being carried. It was being carried to the headmaster's table. Headmaster सार का टेबल को गला कहीं की. Because he had not written anything. कारण से किसी भी लेखी
नथिले ही हैड नॉट रिटन एनीथिंग so headmaster's table it was from this slender indication it was from this slender indication प्लीज slender कहले क्षीण indication कहले सूचना एई स्वल्प सूचना केवल मो आखिर लुहर दाग देखिकी मु किछि भी लेखि नथिली हाँ स्लेंडर इंडिकेशन ऑफ स्कॉलरशिप पांडित्यता नहीं पांडित्यता स्कॉलरशिप दैट डॉक्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन शेष पथरे उपरीत हेले जे शेष रे से कंक्लूजन बाहर कले जे हैं ड्रू द कंक्लूजन दैट आई वाज वर्दी टू पास इनटू हेरो आई वाज वर्दी टू पास इनटू हेरो हाँ गले जे पिला पाखे टैलेंट अच्छी पिलाटा को पास करी दिया जाऊ पिला हार रे पढ़िबो So, by the grace of Dr. Weldon, by the mercy of Dr. Weldon, Winston Churchill was able to study in Harrow. And the sole person who was responsible for the admission of Winston Churchill into Harrow was Dr. Weldon. By his grace only. तांको दयारे, तांको अनुकंपारे, तांकर से माने जजमेंट विचार बुद्धि जोगु यांकु कोठी एडमिशन मिलिला हैरो स्कूल रे एडमिशन मिलिला नहले से एंट्रेंस परीक्षा जो प्रवेशिका परीक्षा थिला से प्रवेशिका परीक्षा रे जमारू भलो करी नथिले वर्दी टू पास इन इट इज वेरी मच टू हिज क्रेडिट इट इज वेरी मच टू हिज क्रेडिट तांकर दया तांको जोगु नहीं टू हिज क्रेडिट इट शोड दैट ही वाज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग एंड from this it is very clear that he was a man who can see things beneath the surface of the things so capable of looking beneath the surface of the things माने भितरिया जिनस को देखि पारुथुबा मनिछ जे ऊपर ठाउरिया माने कोन जिनस को देखि कि निष्पत्ति नवा लोक नथिले किए डॉक्टर वेल्डन ताहले से कोन करथले से भितर जिनस देखि के जजमेंट नउथले मनुष्यर इनर क्वालिटी देखिकी जजमेंट नौतले ना कि पेपर मैनिफेस्टेशन ऊपर से जजमेंट नौतले किए डॉक्टर वेल्डन ही वाज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स ए मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशन कहले प्रयोग एप्लिकेशन तो पेपर मैनिफेस्टेशन कहले पेपर जो लिखिदेले जड़े पिला पाखे खाली टैलेंट अच्छी गोटे पिला भल मार्क पाई से टैलेंटेड आ गोटे पिला जे भल मार्क पाइनी बोली टैलेंटेड नुह यही जिनस उपर से विश्वास करू नथिले कारण समस्त को सबू विषय आसब तार किसी माने न थाए तो किए पेंटिंग रे एक्सपर्ट हो पारे किए सिंगिंग रे एक्सपर्ट हो पारे किए डांस रे एक्सपर्ट हो पारे किए आउ कौन भी एक्सपर्ट हो पारे किए भल चाषी हो पारे तो किए बोले फोटोग्राफर हो पारे तो समस्त गोटे विभिन्न कला अच्छी तो सहीटा दैट इज द इनर क्वालिटी ऑफ ए बॉय ए गुड टीचर मस्ट लर्न दीज थिंग्स जे गोटे पिला केवल पेपर रे भल कर पेपर रे भल कले ही टैलेंटेड पिला यही जिनसटा प्रत्येक टीचर देखा दरकार प्रत्येक टीचर चिंता करवा दरकार जो गुणटा क्या पाखे थिला डॉक्टर वेल्डन के पाखे थिला बिले सो अपन पेपर मैनिफेस्टेशन आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम सो आई हैव हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम तो मो पाखे मो माने डॉक्टर वेल्डन के प्रति एबे भी मो पाखे माने मु बहुत सम्मान दिए तांको बहुत भक्ति करे आउ से भक्तिटा माने डरर भयर भक्ति नुह सेटा होची माने प्रकृत भक्ति कारण से भलिया मनीष नथिले मु आज एही स्टेज रे पहुँची न थांती विंस्टन चर्चिल को कहवा कथा अनुसार सो इन consequence of his decision in consequence of his decision तांको से निष्पत्तिर फल स्वरूप in consequence of his decision I was in due course placed in the third or lowest division of the fourth तो तांको निष्पत्तिर फल स्वरूप कौन है पिले मते हेरो रे एडमिशन मिलिला मु कोठी एडमिशन हेली चतुर्थ श्रेणी रो 3 नंबर सेक्शन सबु तळ सेक्शन सी सेक्शन रे मोर एडमिशन हला
को सेक्शन रे मोर एडमिशन है सेक्शन सी को क्लास रे मोर एडमिशन है क्लास 4 क्लास 3rd or lowest division of the 4th. I was admitted in the 4th class in the 3rd section means section C चतुर्थ श्रेणी तृतीय सेक्शन कहले सी सेक्शन रे मोर एडमिशन है by the grace of Dr. Weldon by the kindness of Dr. Weldon the 3rd or the lowest division of the 4th. Yes. Or bottom form, the names of the new boy were printed in the school list in alphabetical order. The name of the new boys in the school list admission list हारोर जो admission register थिला सेही admission register रे पिला मानकर ना केमती लिखा होतला alphabetical order केमती लिखा होतला alphabetical order रे लिखा होतला केमती लिखा होतला पिले alphabetical order. The name of the students in Harrow school was written in alphabetical order. So in which section he was admitted? को सेक्शन रे तांकर एडमिशन हला को सेक्शन रे तांकर एडमिशन हला बिले in which section he was admitted? Section C. In which class he got admission? In which class he got admission? Yes, the section was 3rd and class was 4th. In which school? Harrow school. Very good. Okay. Jiva Parvati. So new boys were printed in the school list in alphabetical order and as my correct name Spencer Churchill. What was the correct name of Winston Churchill? It was Winston Churchill. The correct name of Spencer Churchill was Winston Churchill. Okay. Churchill began with an S. So my name start with an S. Spencer Churchill Spencer start with S. I gain no more advantage. मते कोनोसी लाभ मिलिला नहीं ए जो अल्फाबेट रो मते कोनोसी लाभ मिलिला नहीं from the alphabet than from the wide sphere of letters जो एते सब शब्द थिला एही शब्द मान का भितरु मते कोनोसी लाभ मिलिला नहीं. So I was in fact only 2 from the bottom. I was in fact only 2 from the bottom. तळ पटु मोर 2 नंबर रे रहिला एडमिशन तळ पटु 2 नंबर मन रखिया पिले नहीं किछि पिला कहंती बाबू तो रिजल्ट केम देला मु क्लास रे पास थई छि तळ पटु आ सुनिथिबा बेले तो ए बेले कोन हला. सो माय नेम वाज रिटेन यू नो आई वाज फास्ट फ्रॉम द सेकंड फ्रॉम द बॉटम तळ पटु 2 नंबर रे मोर ना थिला. एंड दिस टू आउ दु जण जो माने मोर तळे थिले आई रिग्रेट टू से मते दुख लागुची कहिबा पई आई रिग्रेट टू से disappeared almost immediately through illness or some other cause. नहीं disappeared अदृश्य ही गले disappeared almost immediately संगे संगे प्राय संगे संगे through illness or some other cause. So why did those two disappear from the class? Why did those two? Or here another question is how did Winston Churchill become the last boy of the class? नहीं दूसरा question how did Winston Churchill become the last boy of the class? Or why did those 2 students below Winston Churchill disappeared from the class? Look at the question. The reason was obvious, very clear. Because those 2 were under Winston Churchill, they were disappeared immediately through due to illness or some other causes. Like this, he became the last boy of the school. Yes or no? And why those 2 disappear? Because of illness or some other causes. Through illness or some other cause. Okay, let's go to last paragraph of Unit 1. So the Harrow custom of culling the roll is different from that of Eton. The Harrow custom of culling the roll was different from that of Eton. Harrow रो जो थिला Harrow रो custom थिला culling roll कल नवार custom थिला was different from that of Eton. It was different from Eton. Eton रो एटा different थिला. At Eton, the boys stand in a cluster and lift their heads when their names are called. कौन होतला पिले at Eton the boys stand in a cluster and lift their heads when their names are called so कौन करूथिले Harrow school रे से माने at Eton sorry the boys stand in a cluster रे ठिया होतले and lift their heads टोपी को उठाउथिले hats when their names are called जेतेबेले तांकर ना डका होथिला.
एट हारो दे फाइल पास्ट ए मास्टर हारो स्कूल से कौन करते दे फाइल पास्ट ए मास्टर जड़े टीचर को सामना से पास करुले गेटिंग मी सो दे विल फाइल पास्ट ए मास्टर in the school year and answer one by one आउ जड़े पर जड़े उत्तर दौले yes sir जमी मुझे कहि कमलाकांत yes sir विनोद yes sir तेजस्विनी yes sir संध्या yes sir like this getting me so answer one by one my position was therefore revealed in its somewhat invidious similarity मोर position मोर तो रोल नंबर समस्त तले दिला ना भवानी so one by my position was therefore revealed in its somewhat invidious similarity मोर position मु तो सबुठारु तले थिली मु तो सबुठारु तले थिली ना यस जोस्ना मु सबुठारु तले थिली तो मोर ना जेतेबेले डका होउथुला पिले मु जेतेबेले मोर ना जेतेबेले डका होउथुला सेतेबेले मते लाज लागे काहे की लाज लागे समस्त ना डका हबो शेषरे मो ना डका हबो आई एम द लास्ट बॉय ऑफ द स्कूल बिकॉज आई एम द लास्ट बॉय ऑफ द स्कूल सो ह्यूमिलिटी इट वाज द ईयर सो काहे की कारण काहे की तांको खराब लागुथला काहे की तांको लाज लागुथला से ऊपर भी वर्तमान से कहउचंती रीजन टा सुनिबा व्हाई ही हैड दैट इन वीडियो सिमिलरिटी काहे की तांको लाज लागुथला काहे की लाज लागुथला से ऊपर कहै छै इट वाज द ईयर 1887 एटा 1887 मसीहार कथा मन रखिबा इट वाज द ईयर 1887 को मसीहार कथा बिले 1887 एठी गोटे प्रश्न आसे बिले इन व्हिच ईयर विंस्टन चर्चिल गेट एडमिशन इनटू हैरो मन रखिबा इन व्हिच ईयर विंस्टन चर्चिल गेट एडमिशन इनटू हैरो 1887 मन रहिला सो 1887 लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल द फादर ऑफ विंस्टन चर्चिल द फादर ऑफ विंस्टन चर्चिल वाज लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल कौन ना थिला तांकर लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल द फादर ऑफ विंस्टन चर्चिल remember the name father of Winston Churchill was Lord Randolph Churchill so who was Lord Randolph Churchill the father of Winston Churchill what is the name of the father of Winston Churchill Lord Randolph Churchill yes so Churchill had only just resigned his position as leader of the House of the Commons so leader of the House of the Commons से leader of the House of the Commons कहले तांकर जो बाइकेमेरल लेजिस्लेचर इंग्लैंड अच्छे पिले आमर जमी पार्लियामेंट अच्छी माने लोकसभा राज्यसभा अच्छी तांकर भी हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड अच्छी तो हाउस ऑफ कॉमन रो से माने लीडर थिले के विंस्टन चर्चिल इनका बापा लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल तो सही पदर से जस्ट रिजाइन करि था माने ओपोजिशन आमे जमी विरोधी दल नेता कहूचे विरोधी दल नेता जमी कहूचे आम आम ओडिशा जमी मुख्यमंत्री अच्छा विरोधी दल नेता अच्छा तो विरोधी दल नेता से इंग्लैंड विरोधी दल नेता थे हाउस ऑफ द लीडर ऑफ द कॉमन थे तो सही पदर से जस्ट रिजाइन करी 1887 मसीह एंड चांसलर ऑफ द एक्सचेकर से इंग्लैंड अर्थमंत्री अर्थ विभाग मुख्य थे से अर्थ विभाग से मुख्य पदर भी से जस्ट इस्तीफा देते yes reduce syllabus through question asibo Durga Prasad don't ask us a question here chancellor of the exchequer and he still towered in the forefront of politics forefront कहले आग धाड़ी तो इंग्लैंड राजनीतिर से जड़े आग धाड़ी नेता थिले इंग्लैंड राजनीतिर से जड़े आग धाड़ी नेता थिले कहले समस्त जानी इंग्लैंड लोक समस्त जानी इन कन्सिक्वेन्स फलस्वरूप यार कारण जोगु यही कारण जोगु जेहेतु मो बापा इंग्लैंड राजनीतिर जड़े माने प्रतिपत्तिशाली व्यक्ति थिले जड़े माने बहुत सुनामधन्य राजनीतिज्ञ थिले से हाउस ऑफ द कॉमन रो जस्ट रिजाइन करथिले माने अर्थ विभाग मुख्य हिसाब रे जस्ट रिजाइन करथिले आ मु तांकर पुओ थिले नहीं पिले
So, forefront of politics, in consequence, large number of visitors of both sexes. Large number of visitors of both sexes. माने कहले स्त्री एवं पुरुष उभय लिंग नहीं बहुत सेक्सेस कहले उभय लिंग पिले स्त्री एवं बहुत सारा स्त्री एवं पुरुष लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑफ बोथ सेक्सेस माने बहुत संख्यार दर्शक स्त्री एवं पुरुष मिशिकिरी हैं यूज टू वेट ऑन द स्कूल स्टेप्स से स्कूल रो जो पहाच थिला जोठी प्रेयर होतिला जहार तळे प्रेयर होतिला से स्कूल स्टेप रे बोथ लेडीज एंड जेंट्स यस से माने कोन करथिले अपेक्षा करथिले मते देखिबा पई काहाकू देखिबा पई अरे पिले जे देखिबा पई नो आई डोंट केयर अबाउट स्पैमिंग और एटसेट्रा एटसेट्रा एनीवन कैन स्पैम मी इफ यू वांट टू आई डोंट केयर अबाउट स्पैमिंग the forefront of politics in consequence large number of visitors of both sexes used to wait on the school steps the school step re se mane jogu thile mate in order to see me march by se mane kon करथिले मते माने मु जेतेबेले जीवी मो रोल कल पड़िबो मते देखिबा पई जे से रैंडल चर्चिल रो पुओटा किए तार पुओ एठी पडुछ ना ता पुओटा किए को भलिया पिला केमती पाठ पडुछ केमती देखा जाउ ताकू टिके देखिबो दैट्स व्हाई दे वर वेटिंग गेटिंग मार्च बाय एंड आई फ्रीक्वेंटली हर्ड सबु बेले सुनुथली आई फ्रीक्वेंटली हर्ड द irreverent comment असम्मानजनक मंतव्य irreverent comment कहले पिले असम्मानजनक मंतव्य irreverent comment why is last of all what is the comment why is last of all ये पिलाटा समस्त पछरे काई अछि या कोन पाठ आजुने एक मूर्खटा why is last of all this was the comment being commented by the person or by the visitors were waiting on the school step in order to see Winston Churchill march by. Winston Churchill कर marching माने रोल कल पड़ेला बेले यांकु देखिबा पई जो लोक माने रहउथिले से माने कमेंट करूथिले why is last of all ए पिलाटा समस्त लास्ट रे काई अछि ये कोन किसी जानुनी ये कोन मूर्खटा तो दिस इज व्हाट डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट तो एई भलिया अजथा कमेंट सब आउथला जो कमेंट की तांको भलो लागू नथिला तांको लाज लागुला तो पिले फास्ट गोटे यूनिट सारिबा पई हमको 50 मिनिट लागला 45 मिनिट गोटे क्लास लागला पिले बुला ठीक अछि तो वर्तमान जीव में क्वेश्चन आंसर ऊपर को क्वेश्चन आंसर टिके डिस्कशन करबा क्वेश्चन आंसर पाखा पाखी 11 टी प्रश्न अछि टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन 13 टी प्रश्न अछि 13 टी प्रश्न तापर या ऊपर यार किछि आउरी एमसीक्यू माने हमें देखि दवा एमसीक्यू कोन कोन हबो तापर आई थिंक एटा बहुत समय लागियो आज क्लास को सारिबा ठीक अछि बिले तो आगो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दबा तापर एई चैप्टर रो कोन कोन एमसीक्यू प्रोबेबल एमसीक्यू टेस्ट पेपर रिलेटेड कोन एमसीक्यू अछि आलोचना करिबा तापर आज क्लास को सारिबा बिले आ समय हले पढिबा नेक्स्ट तो प्रथम प्रश्न कोन अछि डज द राइटर लाइक एग्जामिनेशन लुक आंसर तमे दबो बिले फर्स्ट क्वेश्चन अछि टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन डज द राइटर लाइक एग्जामिनेशन कोड द लाइन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर Okay, Niharika, very good, beta. The author doesn't like examination. The author doesn't like examination. काहे कि को सेंटेंस ता में कोट करिबा the examination were a great trial to me. मन रखिबा the examination were a great trial to me. This is the line we have to quote. Next question number 2. Mention the subject that were dearest to the examiner. Mention the subject that were dearest to the examiner. को सब्जेक्ट एग्जामिनर मान को भल लागुतला मेंशन द सब्जेक्ट्स दैट वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर लैटिन एंड मैथमेटिक्स दीज टू सब्जेक्ट्स वेर द डियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनर नहीं लैटिन एंड मैथमेटिक्स आर द डियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनर मैथमेटिक्स एंड लैटिन ओके यू कैन राइट 3 नंबर प्रश्न व्हिच सब्जेक्ट डिड द राइटर लाइक द मोस्ट व्हिच सब्जेक्ट
did the writer like the most? History, poetry, and writing essays. Kono? History, poetry, and writing essays are the writer's favorite subject. What are those? History, poetry. Yes, Dipti. History, poetry, and writing essays. Very good. Question number 4. 4 number प्रश्न देखिबा. 4 number प्रश्न कोन पिले? What reason does the writer give for his not doing well in the examination? कारण कोन? What reason does the writer give for his not doing well in examination? परीक्षा रे भलो न करिवा पाई कोन सब कारण विंस्टन चर्चिल दर्शाई थिले? What were the reasons? So reason number 1, he did not like exactly the subject which were being examined. जो सब्जेक्ट गुड़ाक परीक्षा होता से सब्जेक्ट गुड़ा को पसंद करू नथिले. On the other hand, the examiners were interested to examine the students in those subjects, means Latin and mathematics, which were not dearest to Winston Churchill. The writer wanted to show his knowledge. But the examiner wanted to expose his ignorance. The examiners wanted to expose his ignorance. And this set of treatment had only one result. He did not do well in the examination. So परीक्षा रे भलो कले ना. तो एठी कहला चर्चिल जो जिनस सब जो परीक्षा माने दांको भल लागो जो सब्जेक्ट भल लागु नथिला सेही सब्जेक्ट गुरिक परीक्षा कराउतला. आ चर्चिल चाहूले से जानिबा भितर प्रश्न पचरा जाऊ किंतु एग्जामिनर माने से जो जानि नथिबा प्रश्न सब पचारुतले एहार फल स्वरूप से परीक्षा रे भलो कले नाही. ओडिया रे भी कहि देली, इंग्लिश रे भी कहि देली. ठीक अछि. जो प्रवृत्ति प्रश्न 5 नंबर प्रश्न. What did the writer write in the answer book for the Latin paper? Latin paper से कौन लिखिले? Latin paper से कौन लिखिले? What did the writer write in the answer book? He wrote his name, then number 1, and after much reflection, he put bracket and the number, and he did not get anything either connected with it or either relevant or true. कौनसी जिनस पाइले नहीं. Question number 6. What are the sad spectacle for him? What was the sad spectacle for him? तांको पई सबठारु दुखदायक दृश्य कोन थिला? What was the sad spectacle? The sad spectacle for Winston Churchill was the tear marks on the question paper, on the answer script. The tear marks on the answer तांकर जो लुह पड़ी के जो दाग होइतिला आ आमे जदी टेक्स्ट भितर लिखिबा आमे लिखि परबा the blot and smudge, the mark of blot and smudge was the sad spectacle for Winston Churchill, or you can write in your own language the tear mark. Dipti beta, yes, you can write the tear mark. Next question को जीवा पिले. Question number 7 number प्रश्न कौन? What was the writer's position in the merit list for admission? Admission रो जो merit list थिला, writer का position कौन थिला? The writer position on the merit list of admission register was, he was just only 2 from the bottom. Only 2 from the bottom. Because the name in the admission register were written according to alphabetical order and his right name was Winston Churchill. That's why he did not get any advantage from the wide pair of alphabets. जीवा परवर्ती प्रश्न. Question number 8. 8 number प्रश्न. Whom does he give the credit of his success in the entrance examination? Why? काहाकू से क्रेडिट देइचंती एंट्रांस एग्जामिनेशन रो आउ काहे की? The writer gives credit to Dr. Weldon on passing his entrance examination because he had written nothing in the Latin paper. It was Dr. Weldon who drew the final conclusion that he was worthy to pass to Harrow, and it was for his broad-minded views he was able to enter to Harrow. Question number 9. What does he mean by I gain no more advantage from the alphabet than from the words pair of letter? It is जो कहिचंती यार अर्थ कोन से काहे की एबली कहिचंती. So the author uses I gained no more advantage from the alphabet than from the words pair of letters.
Because the name in the admission register at Harrow School was written in alphabetical order, and as his name was started with S, Spencer Churchill, so he gained no more advantage, and his name was written just from the bottom of the two. Yes, he became the last boy of the school, or he was just two from the bottom. That's why he had told like this. Question number 10. How did he become the last boy in the class? I was asking sometimes ago. How did he become the last boy in the class? Sreniro shesh pila se kivali hele. How did he become the last boy in the class? So those two were after Winston Churchill. After a few days, they took their TC due to illness or some other cause. Yes, Niharika. That's why he became the last boy of the school. कारण से दुई जन पळैला परे ए बाबू लास्ट ही गेले. Question number 11. What is the custom of calling the roll at Harrow? Custom of calling the roll at Harrow. Harrow ro roll call number custom कौन थिला? So at Harrow, the students file past a master and answer one by one. At Harrow, the student file past a master and answer one by one. This was the custom of roll call at Harrow. Question number 12. Bar number प्रश्न देखिबा पहिले. What is the custom of calling the roll at Eton? Eton रे roll call कौन थिला? Roll call number system. They leave their heads. The boys stand in a cluster and leave their heads when their names are called. Question number 13. Why is last of all? Why did people say so? Why is last of all? Why did people say so? Nahin? So this was the matter of 1887. At the time, the father of Winston Churchill, Sir Randolph Churchill, just resigned from the leader of the House of the Commons and from the post of Council of the Exchequer. And as the son of Sir Randolph Churchill, people of both sexes were waiting to, watch Winston Churchill march by. And when they saw Winston Churchill was marching at the end of the class, they were commenting, why is last of all? Why is last of all? So this is all the question answer. टिके किछिटा MCQ आलोचना करिया बिले probable MCQ ये भितरु. So the question is, how old was Winston Churchill when he entered the inhospitable regions of examination? तांकु केते वर्ष होतला पिले मु ऑप्शन देबी नै तम कहइबो. How old was Winston Churchill when he entered the inhospitable regions of examination? 13. Don't say 12. It was 13. 13 वर्ष. Question number 2. How were the exams to the author? परीक्षाटा किभଳି थिला तांका पई? परीक्षा किभଳି थिले पिले? How were the exams to the author? Happy, difficult, great trial, hard times? How were the exams to the author? No, yes, great trial. Okay. Then question number 3. The author did not like what? कौन तांको भल लागु नथिला? The author did not like what? History, poetry, writing essays, mathematics? Italy mathematics, yes. Italy and Latin and mathematics. Latin and mathematics. Okay. Question number 4. Which subject did the author say were the dearest to the examiner? Examiner मान का favorite subject कौन थिला? Examiner मान का favorite subject कौन थिला पहले? Latin and mathematics. Yes, Lipsa. Then, which subject did Churchill like? Churchill को subject सब पसंद करूथिले. Which subject did Churchill like? History, poetry and writing essays. History, yes. History, poetry and writing essay. Then, which subject did Churchill like the least? को subject तांको भल लागु नथिला? Which subject did Churchill like the least? Latin and mathematics. How were the examination question to the author? Examiner questions किभଳି थिला? Question प्रश्न गुडी किभଳି थिला तांको पई? How were the examination question to the author? Difficult, easy, unattractive, unsatisfactory?
केमती थिला तांका भाई क्वेश्चन गुडा केमती थिला पिले डिफिकल्ट इजी अनअट्रैक्टिव अनसैटिस्फैक्टरी डिफिकल्ट थिला नहीं पिले डिफिकल्ट थिला यस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वुड हैव चर्चिल लाइक टू बी आस्क्ड चर्चिल कौन तांको पचारिबा पई चाहुतले ऑप्शन ए टू से व्हाट ही न्यू ऑप्शन बी टू से व्हाट ही लाइक्ड ऑप्शन सी टू से अबाउट हिज फेवरेट सब्जेक्ट डी नॉट टू बी आस्क्ड एनीथिंग एट ऑल what he knew yes what he knew next question what did Churchill feel the examination always try to ask what did Churchill feel the examination always try to ask Churchill कौन feel करुथिले examiner माने कौन पचारुथिले option A question from the subject he disliked B what he did not know C what he wanted to know D what he did not like कौन हबो पिले what he did not know option B what he did not know next question what would have Churchill willingly displayed if he were examined in his favorite subject जदि तांको जानिथिबा सब्जेक्ट परीक्षा हेले से कोन डिस्प्ले करिवे बोली चाहुथले बिले हिज नॉलेज हिज इग्नोरेंस हिज एरोगेंस हिज ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज यस नॉलेज नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द एग्जामिनर सीक टू एक्सपोज व्हाट डिड द एग्जामिनर सीक टू एक्सपोज इग्नोरेंस यस दीप्ति देन why did not Churchill do well in examination काहे की परीक्षा रे भलो कले नाही why did not Churchill do well in the examination option A he did not study hard B he disliked the examination subject C he was not prepared D he did not want to get into harrow कोडा ठीक उत्तर होची he disliked the examination subject कारण सब्जेक्ट गुडा को बी यस नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द हेडमास्टर हारो हेडमास्टर किए थे बिले हु वाज द हेडमास्टर डॉक्टर वेल्डन यस डॉक्टर वेल्डन वाज द हेडमास्टर यस नेक्स्ट क्वेश्चन द हेडमास्टर वाज टेकन ए ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ चर्चिल्स यस को जिनसर ब्रॉड माइंडेड व्यू नेले से ऑप्शन ए एग्जाम पेपर बी हिस्ट्री पेपर सी लैटिन पेपर डी इंग्लिश पेपर को पेपर को लैटिन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द हेडमास्टर शो इन जजिंग चर्चिल्स जनरल एबिलिटी व्हाट डिड द हेडमास्टर शो इन जजिंग चर्चिल्स जनरल एबिलिटी चर्चिल कर जनरल एबिलिटी शो जज करिबारे हेडमास्टर कौन नेले कंसर्न एंगर कंटेंट डिसर्नमेंट कोडा ठीक उत्तर discernment yes next question देखिबा why the headmaster's judgment of Churchill general ability in the Latin paper remarkable काहे की से माने काहे की तांकर जजमेंट को रिमार्केबल बोली कुहा गला पिले ऑप्शन ए बिकॉज़ ही हैड डन वेल बी बिकॉज़ ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सी बिकॉज़ ही डिड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन डी बिकॉज़ ही हैड ए गुड हैंडराइटिंग कोडा ठीक उत्तर होबो because he did not answer any question karan yes because he did not answer any question then question next question what did Churchill write on his Latin paper what did Churchill write on his Latin paper तंगर Latin paper से कौन लिखिले option A his name and class B his name and the first question number C his name and the answer to the first question D his name कोडा ठीक उत्तर होची ऑप्शन बी his name and the first question number yes his name and the first question number then what was the sad spectacle for Winston Churchill what was the sad spectacle for Winston Churchill का पाई sad spectacle कौन थिला बिले option A not being able to answer a single question B not completing his paper in time C not appearing the examination D not being able to leave the examination कोडा ठीक उत्तर ऑप्शन A not being able to answer a single question not being कारण से गोटे भी प्रश्न उत्तर दे पारिले नहीं okay why did Churchill keep on staring at his paper after writing down the number of the question काहे की से चाहि रहिले खाली नंबर लिखला पर काहे की से चाहि रहिले तांकर क्वेश्चन पेपर को आंसर पेपर को ऑप्शन ए he did not know the any answer B he did not like the Latin paper C he did not want to get into harrow D he did not learn Latin paper कोटा ठीक उत्तर हो या he did not know anything okay option A होची ठीक उत्तर पिले परवर्ती प्रश्न देखिबा whom did Churchill give credit for for his passing into harrow कहा को क्रेडिट दियंती तांकर से जो पास कले हारो को जो पास हले हारो जो तंगर ना हले कहा को क्रेडिट दियंती से
Option A, his father. B, his headmaster. C, his Latin teacher. D, his English teacher. Dr. Well done. Yes, headmaster. So, পরবর্তী প্রশ্ন, whom did Churchill consider as a man capable of looking beneath the surface of things? Whom did Churchill consider as a man capable of looking beneath the surface of things? ଭିତରିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଲୋକ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ? The headmaster. Okay. So, what did Churchill have for his headmaster? What did Churchill have for his headmaster? ତାଙ୍କ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ଚର୍ଚିଲଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଡମିରେସନ୍, ବି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ, ସି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଡିସର୍ନମେଣ୍ଟ, ଡି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ। ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ, ୟେସ୍। ଦେନ୍ where was Churchill placed in Harrow? ହାରୋରେ କେତେ ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଲା? କେଉଁ ସେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା? Option A, in the 4th division, B, in the lowest division, C, in the 2nd form, D, in the 4th form. କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ପିଲେ? In the lowest division, ନାଇଁ, in the lowest division, ସବୁଠାରୁ ତଳେ, in the lowest division. Question number 24 को ଯିବା। How are the names of the boys printed in the school list? School list ରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ସବୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଉଥିଲା ପିଲେ? Option A, in the order of merit, B, in alphabetical order, C, in the order of grade, D, in the order of admission number. କୋଉଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ? Alphabetical, yes, alphabetical, B. Okay, next question is Churchill was in fact the dash from the bottom of the whole school. Dash from the bottom, ତଳପଟୁ କେତେ ନମ୍ବର ଥିଲେ? Option A last, option B third, option B, option C second, option D first. Okay, third from the bottom, yes. Then last question देखिए पिला, last question, why did the last student leave the Harrow? कहीं जो लास्ट दुईटा पिला थिले से दुईटा पिला कहीं छाड़ी गले पिले? ऑप्शन ए, they were the last. B, they got into Eton. C, through illness or some other cause. D, they were humiliated for being the last. कहीं छाड़ी गले? Why did they leave? Illness. Okay, through illness or some other cause. Next question देखिवा, where was Churchill studying before he got into Harrow? Where was Churchill studying before he got into Harrow? ହାରୋରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚିଲ୍ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଟନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଏଲ୍ଟନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଆଟନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଇଟିଏନ୍। ଇଟନ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଇଟନ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, why did many visitors wait on the school step to see Winston Churchill? କାହିଁକି ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ, because his father was an eminent person. C, he was the last boy at Harrow. C, he was very handsome. D, his father was very rich. So what is the reason why people were waiting? Because his father was an eminent person. Option A. Who was Lord Randolph Churchill? Next question, who was Lord Randolph Churchill? Lord Randolph Churchill किए थे पिले? Option A, the author's father. B, the author's teacher. C, a political leader. D, the headmasters of Harrow. So who was Lord Randolph Churchill? The author's father. Option A. Yes. So next question, who was the leader of the House of the Commons and Chancellor of the Exchequer? Who was the leader of the House of the Commons and Chancellor of the Exchequer? Option A, Spencer Churchill. B, Winston Churchill. C, Lord Randolph Churchill. D, Leopold Emery Churchill. Churchill's father. Okay, so Lord Randolph Churchill. Okay. Next question, what are the disrespectful remark that Churchill frequently heard from the visitors? visitor मानकर से असम्मान जनित जो जनक मंतव्य से शुणुले से मंतव्यटा कौन थिला पिले? ऑप्शन ए, why was he last of all? B, why was he in Harrow? C, why was he weak? Why is last of all? Okay, so that's all for the day. आज एति पिले गोटे यूनिट सरीला, गोटे घंटा भितर गोटे यूनिट आउ तार प्रत्येक क्वेश्चन आम आलोचना कले तो गोटे चैप्टर सरी पारुनी, गोटे 2-3 घंटार क्लास हो गोटे चैप्टर पूरा सारिबा जदि तो ट्राए करी, तथापि चेष्टा करुच्ची करी जिते पारि से करी। ओके मिले तो जी पार्ची करुच्ची बिले। ओके, स्टे ट्यून्ड विथ मास्टर ऑफ इंग्लिश। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पढ़ापढ़ी करवा समस्ते।